based on the byte instruction. Okay, so वो आप पूरे के पूरे रजिस्टर पे करते हो, वो पूरे के पूरे 8 बिट के ऊपर करते हो. Okay, so that is the difference. यहाँ पे जो बिट ऑपरेशन जो आप करते हो वो 3 जगह पे करते हो. फर्स्ट इज द कैरी फ्लैग वेयर यू डू, सेकंड इज द एसएफआर, एंड दिस एसएफआर व्हिच इज द स्पेशल फंक्शन रजिस्टर. These SFR that we generally use for performing the bit operation are only the SFR which is bit addressable. यानी जो आप bit addressable SFR है उसी के ऊपर आप bit operation कर सकते हो. And the third place where you can perform this bit operation is on the bit addressable RAM. So in RAM we have got 3 regions. The first region was called as, was the first region called as? पहला region क्या होता है RAM में? What was the first region? You guys remember that? RAM के अंदर रजिस्टर, जनरल पर्पस रजिस्टर, ओके, या मेमोरी बैंक रीजन बोल सकते हो. सो वहाँ पे आपका मेमोरी होता है, वहाँ पे मेमोरी बैंक होते हैं, 4 बैंक होते हैं और हर एक बैंक में आपके 8 रजिस्टर्स होते हैं. ओके, सो वो एक रीजन होता है. सेकंड रीजन इज कॉल्ड एज अ बिट एड्रेसेबल रैम, यानी आपका बिट ऑपरेशन करने के लिए वहाँ पे बिट एड्रेसेबल रैम होता है, which has the starting location or the starting address as 00H and the last address as 7FH. और उसके ऊपर the third region that we have, and that third region is called as, what is the third region called? Scratch pad drive, which is generally used for storing any data, whatever you feel like. So वहाँ पे आप store करते हो. Okay, which does not have any relevance over here. The only relevant part of that RAM is the bit addressable RAM. So bit addressable RAM में जो भी आप operation करते हो वो bit के ऊपर करते हो. So because you want to perform operation on bit, you'll be using Boolean instructions. Okay, so these are the 3 places where you can perform the bit operation. One is called as carry flag, second is called as SFR, and then we have the bit addressable RAM. Okay, so the instruction that we have covered till now, which is 79, 80 and 81, is the set B of carry flag, which will make the carry flag as 1, clear C, which will make the carry flag as 0, and then complement C, which will complement the content of carry flag. So the carry flag was 1. After performing the complement of C, it will be equal to 0 now. Or if the carry flag was 0, after performing the complement operation, it would be now 1. Okay, so that is all there for the carry flag, and majority of the bit operation will be performed on the carry flag. Now the instruction number 82, we'll just go to instruction number 82. Yeah, so the next instruction that we have is called as, again the same instruction that will be that we have already discussed. The same instruction will be there, but that instruction will be on set B. Okay, this will be B. So what is B over here? This B can be either 2 things. एक तो हमने कैरी देख लिया है, अब 2 जगह बची है जहाँ पे आप बिट ऑपरेशन कर सकते हो. So which are the 2 places where B can be put down? What are the 2 things? एक या तो B एड्रेस होगा, which is the bit addressable address, bit address, या जो B है वो आपका SFR का individual bit address होगा. Okay, so I will just give you an example. So set B can be set B P0.1. This is the one way of doing it, and second way of doing this is set B 01H. So can you tell me what is happening in the first one, set B P0.1? What is P0.1? Port 0 का second first location, second location. The first location is P0.0, second location is P0.1. So second location या second bit को आप set कर रहे हो. Okay, so what is port 0? Port 0 is SFR or general purpose register, GPR. Port 0 is SFR है ना, SFR है port 0. So SFR जो है, because port 0 is a 8-bit port, 8-bit का पोर्ट है वो, तो उसके अंदर सारे के सारे जो बिट है आप खुद से उसको एड्रेस कर सकते हो. सो हाउ यू कैन एड्रेस पोर्ट 0? पोर्ट 0 कैन बी एड्रेस्ड फ्रॉम P0.0 से लेके देन P0.1 आएगा, देन P0.2 आएगा, एंड व्हाट विल बी द लास्ट एड्रेस ऑफ द पोर्ट 0? लास्ट एड्रेस वुड बी P0.7. So this is how we address the different ports. Okay, similarly port 1 को भी आप ऐसे ही हर एक को आप एड्रेस कर सकते हो. सिमिलरली पोर्ट 2 को आप एड्रेस कर सकते हो, पोर्ट 3 को आप एड्रेस कर सकते हो. अगर आपको याद होगा PSW को भी आप एड्रेस कर सकते हो. PSW के अंदर
The first address of PSW was the first bit का address PSW point P0. 0, PSW point 1. Okay, then PSW point 2, and the last one was called as PSW point 7. 7. ओके, सो जो भी आपका SFR है, SFR डॉट जो आपका बिट का एड्रेस होगा वो आप वहां पे लगा करके उस बिट के एड्रेस को यानी उस SFR के बिट को आप एड्रेस कर सकते हो. ओके, सो द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन दैट वी हैव सीन, व्हाट वी हैव डन इज कि हमने पोर्ट 0 के जो सेकंड बिट है उसको हमने सेट कर दिया. सो सेकंड बिट जो आपका होगा व्हिच इज P0.1 उसको हमने सेट किया. मतलब क्या किया? 1 किया. Okay, so that is the way of writing. So generic form we can write down as set B and in B as over there. So B can be two things. Either it can be port 0.1 or any SFR का bit address, or it can be a bit addressable RAM का कोई भी एक bit. So over here the second instruction that you have, so that over here this 01H is what? Is it data or is it address? It is address. Data क्यों नहीं है? Because we don't have hash over there. Okay, so it is address. But this address is a byte address or a bit address. How to identify that? It depends on what instruction you are performing. It depends on the instruction that you are performing. So since the instruction that you are performing is set B, which is a bit instruction, that means this address would be bit address. So bit address जो है, जो आपका RAM था, उस RAM के अंदर 3 region थे. Okay, so you have got the first region, region 1. Then you have got region 2. Region 2 में आप क्या करते हो? कितना बाइट होता है यहाँ पे region 2 में? How many byte we have? Do you guys remember that? How many bytes? It was 16 byte. 16. Okay, so 16 byte है, यानी total 16 into 8 which is equal to 128 bit होगा. 128 bit का जो starting location होगा, the starting address of this first bit would be 00H, and the last address of this region or the last address of this bit would be 7FH. So ये जो आपका एड्रेस है which is from 00H से लेके 7F के बीच में टोटल 128 बिट लाई करता है, और 128 बिट के ऊपर आप ऑपरेशन कर सकते हो. उनमें से कोई भी एक बिट को आप सेट कर सकते हो. सो हाउ टू डू दैट? जस्ट राइट सेट बी एंड राइट डाउन द एड्रेस ऑफ दिस बिट एड्रेसेबल RAM. सो मैंने 01H किया तो इसका मतलब ये वाला 00 था, उसके बगल वाला which is 01H, यहाँ पे it will make the content as 1. Is it clear? Yes sir. Yeah, so that is how we can perform the set operation. तो set जो है मैंने 3 जगह पे किया. एक तो पहले carry किया which is the default one, so set भी मैंने C कर दिया, और दूसरा जो set करना था मैं either I can perform on SFR or I can perform on the bit addressable RAM. So that I've done with the above 82 number का instructions है. Clear है? Is this instruction clear? Yes sir. Yeah. So अगर एक और example देखना है तो I can perform as set B. Instead of P0.1, I can write down PSW point let's say 3. PSW point 3 कौन सा बिट है? किसी को याद है? Which is PSW point 3? Program Generators word में fourth bit कौन सी है? You guys remember that? RS1. S0. RS0. Okay. And PSW point 4 is RS1. So basically used for selecting what? RS0 और RS1 क्या select करते हैं? Bank. मेमोरी बैंक के लिए. तो इसके बेसिस पे हम मेमोरी बैंक को सेलेक्ट कर सकते हैं. ओके, सो या सो ये एक वैलिड इंस्ट्रक्शन है. ओके, सो आई कैन एड्रेस द बिट एड्रेसेबल SFR. सो SFR जो कि बिट एड्रेसेबल है उसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ. ओके, सिमिलरली सेट बी अगर मैंने यहाँ पे लिखा और मैंने लेट्स से यहाँ पे 80H किया या 85H किया, so can I do this? Will it be a valid instruction? Will this be a valid instruction? The address that I'm passing, that is 85H. Is that a valid address? Yes. The address is from where to where? Yes. 00H to 7FH. 7FH. 85. Is it in that range or it is out of the range? Out of the range. It is out of the range. So that means this instruction will be invalid, right? It will be invalid. It will be only valid if the address is from 00 to 7FH. Is it clear?
Yes. Yeah, so that is instruction number 82. Next we have instruction number 83. Okay, so B के ऊपर, small b के ऊपर आपने set b किया, अब उसके ऊपर आप clear भी कर सकते हो. You can perform the clear operation on small b. So small b can be again the same thing, which can be a कोई भी SFR का कोई bit अगर आपको clear करना है तो आप set b clear P0.0, P0.1, PSW.3 या कोई भी अगर आपको SFR के एक bit को अगर आपको clear करना है, you can do that. और you can also perform clear bit addressable RAM के अंदर कोई bit को अगर आपको zero करना है, you can also do that by giving the address starting from 00H to 7FH. Is it clear? Is it clear? Yes. Yeah. So अगर मैंने यहाँ पे clear P0.1 किया, इसका मतलब it will make port 0 का second bit as 0. और अगर मैंने clear 01H किया, इसका मतलब 01H लोकेशन पे, which is the bit location on the bit addressable RAM, उस लोकेशन पे जाके it would make that bit as 0. Okay, so that is the meaning of that particular instruction. Is it clear? Yes, sir. Yes. Yeah. So instruction number 84 now. Okay, so again the third instruction was, which would be the third instruction? Any guess? Third instruction would be, come on, say it fast. Complement B. Complement B. Okay, so it will perform the complement of B. So whatever is the content of B, which is that either SFR का bit या bit addressable RAM का bit, उसका जो भी कंटेंट होगा उसका सिर्फ कॉम्प्लीमेंट लेके आपको उसके अंदर स्टोर कर देगा. ओके, सो अगर वो 1 होगा तो 0 बन जाएगा, 0 होगा तो 1 बन जाएगा. ओके, एज सिंपल एज दैट. सो इट विल अगेन हैपन ऑन द SFR के बिट पे या बिट एड्रेसेबल के RAM के बिट पे. ओके, सो द टू एग्जांपल दैट यू कैन गिव इज CPL P0.1 and CPL 01H. Is it clear? Yes. Yeah. So we'll go to the next set of instruction. We'll go to the next instruction, which is instruction number 85. Now, bit operation or the bit can also be transferred from one location to another. Bit को आप एक जगह से दूसरी जगह पे move भी कर सकते हो. Okay. So for that we have an instruction which is called as move C, B. There is an instruction which is called as move C, B. So can you tell me what is happening? Where the data is moving from where to where? B to C. It is moving from B to C. What is B and what is C? B is any bit addressable location and C is B is any bit addressable location. That is okay. That is correct. But it can खाली वो bit addressable location नहीं है. उसके अलावा it can also be bit of SFR. It can also be bit of SFR. बराबर. B can be two things. B can be any location or it can be bit of a SFR. Whereas C will be what? carry flag. Carry flag. Carry flag. So basically आप क्या करते हो, कोई भी लोकेशन से यानी बिट एड्रेस के लोकेशन से या कोई भी SFR के लोकेशन से डेटा को यानी एक बिट को आप मूव कर सकते हो इनटू कैरी फ्लैग. ओके, सो द इन दिस द कैरी फ्लैग will get the data from B. Okay, so B is nothing but it can be two things. First is the bit addressable RAM के अंदर का कोई एड्रेस होगा और सेकंड B कैन बी बिट ऑफ SFR. कोई भी SFR का एक बिट होगा. ओके, सो दैट यू कैन डू, यू कैन राइट. सो एग्जांपल दैट आई कैन गिव इज मूव C, P0.1. ओके, सो व्हाट इज हैपनिंग, पोर्ट 0 का सेकंड बिट का जो भी डेटा होगा, whether it can be 1 or it can be 0, that would be transferred where? That would be transferred where? Carry flag. Carry flag. In the carry flag. It would be transferred in carry flag. Okay. Similarly, I can have move C, 01H. Okay. Move C, 01H. So where the data has been transferred from where to where? From the 01H location to carry flag. But this 01H is bit address or byte address.
Bit address or byte address? 01H is bit address or byte address? Tell me fast. 01H कौन सा एड्रेस होगा? बिट एड्रेस होगा या बाइट एड्रेस होगा? This 01H that we are talking about, will it be a bit address. It will be bit address. It will be bit address, okay? Because we are dealing with bit instruction, okay? So there is a difference between move A, 01H and move C, 01H. Can you identify which is a bit instruction and which is a byte instruction out of this? Can you identify? Yes. इस instruction में और इस instruction में कौन सा bit है और कौन सा byte है? Can you tell me which is a byte instruction and why it is a byte instruction? Which is a byte instruction? Accumulator. Destination register. ये वाला आपका Accumulator in the second is. इसके अंदर accumulator है, which is a 8-bit register. We are talking about a register. That means we are working on a byte of data. So this address that we are talking about is a byte address. Is it a? It is a byte address. But over here, this is what? This is what? Bit. Carry flag. It is carry flag. Carry flag is generally a bit data. It deals with only a single bit. Okay, so that is why 01H that we are passing over there, that 01H will be the address of bit address, not the byte address. Is it clear? समझ में आया? So Yes. 01H in this case will be considered as a bit address because we are dealing with carry flag. Over here 01H will be considered as the address of byte RAM. Okay, RAM के अंदर जो byte address है उसको consider करेगा because we are dealing with accumulator. Okay, so जो आपका address है, the address can be from 00 to 7FH. Both the address can be either bit address or the byte address, but it totally depends on which instruction that you're using. If you're using a byte instruction, in that case it will assume the byte address. If it is a bit instruction that you're using, in that case it will assume the bit instruction, bit address. Is it clear? Yes, sir. Yes. Yeah. Next is instruction number 86. Instruction number 86. Instruction number 86 is just the vice versa of it. So over here, B will get the data from carry flag. Okay, so port 0, port 1 के कोई भी bit को आप change कर सकते हो by putting the value of carry flag into it. Okay, या program status word के कोई भी bit को आप change कर सकते हो by putting the carry flag into it. या कोई भी bit addressable RAM को आप change कर सकते हो by putting the content of carry flag into that particular bit addressable RAM. समझ में आया इसका क्या होगा? Who will get the data? B will get the data. From where it will get the data? From the carry flag. Is it clear? Is this instruction clear to you? Yes. Yeah. So that is move B, C. Then instruction number. The next is 87. It's called as ANL C, B. Any wild guess what will be happening? What is And happening? operation. It is the AND operation which is happening between whom and whom? Between whom and whom? C and B. C and B. C is what? Carry flag. And B is what? B can be? Bit of SFR and bit addressable. It can be bit address or it can be bit of any SFR. Okay. So C, B, उन दोनों के बीच में AND operation होगा and the result will be stored where? Carry flag. Carry flag. So I'll be carry flag will get the data by performing the bit operation or the AND operation between C and B. So this B can be bit address or it can be SFR का bit. Okay, so bit of SFR. Clear है? Is it clear now? समझ में आया? Yes. Yeah. So that is instruction number 87. Instruction number 88. Okay, I'll just write down over here. Instruction number 88. It is ANL C, /B. What will happen over here? Any guess? एक तो confirm है यहाँ पे operation कौन सा हो रहा है? Can you tell me what is the operation that has been happening over here? And
एंड ऑपरेशन, लॉजिकल एंड ऑपरेशन होगा। किसके किसके बीच में होगा? एक तो पता है विच इज कैरी फ्लैग। व्हाट इज स्लैश बी देन? एनी गेस? व्हाट इज स्लैश बी? एनी गेस? No. No. स्लैश बी इज नथिंग बट बी बार। वी कैन नॉट राइट डाउन बी बार। कीबोर्ड में बार ऊपर बार नहीं होता ना, so that bar can be indicated as slash over here. Barabar? On keyboard, when you type the program, you have to write down a slash b. So what is b bar? Can you tell me now what is b bar? Slash b is nothing but b bar. Complement B. Complement of b. So first we take a complement of b. Then after getting the complement of b, we perform the AND operation between the complement of b and carry flag. Is it clear now? Is it clear? So what we Yes. do? Yes. We perform an AND operation, but AND operation is between the carry flag and b. But before taking b, we have to take the complement of it. So we take the complement of b and we take c, and then we perform the AND operation. So this is what we get as the output. Is it clear? Is the output clear to you? Yes, sir. Yeah. So who will get the data? C will get the data. C will get the data by performing the AND operation between carry flag and b bar. इनके बीच में आप AND perform करोगे, and finally the data will get stored in C. Is it clear? Yes. Yeah. Instruction number 88. Then we have instruction number 89. Okay. So again, these two instructions, which is AND, will be also performed for OR also. OR के लिए भी same instruction होगा. So it will be ORL C comma B. So what is happening over here? Or operation between C OR and operation between carry flag. So between carry flag and between B flag. Or B, which is a bit address, or it can be a bit of SFR. Okay. So this is carry, this is B. So you'll get as the output as ORL. Okay. So yeah. So C will get the data, and that data would be get by performing the OR operation between C and B. Okay. And finally, the instruction number 90 and the last instruction of this instruction group, instruction number 90, is called as ORL C comma slash B. I'll just write down over here instruction number 90 ORL C comma slash B. Okay. So what is happening over here? C will get the data, but that data will be performed by performing the OR operation between C and complement B. Complement to B. complement of B or B bar. Okay. So it can be represented with the help of logical diagram or the logic diagram, where C can be passed directly, but B has to take a complement of itself, and then we'll be performing the OR operation between them. Is it clear? Yes, sir. Yeah. So that is all that can be asked in this there in this particular instruction group. एक एग्जाम में अभी नहीं पूछा था, हार्डली मेरे ख्याल से 4-5 साल पहले जब हम एग्जाम दे रहे थे, which is like 8 or 9 years before, I think. Yeah, last time I've given the exam of this paper was like in 2007. I've gone in my engineering. 2008, 2009. 2009 I've given the paper for 8051. During that time, they have asked this question. Okay, I'll just draw the diagram. We have got two inputs, those AND being performed, and then we have OR operation being performed between two set of input. In दोनों के बीच में we have again an AND being performed. Okay, then we have OR being performed between the third one, and a NOT gate being used over here. Okay, finally getting this data, we perform an OR in between it. Okay, so what they've asked is simulate the following circuit diagram with the help of instruction in 8051. Okay, so 8051 में आपको instruction लिखना था which will simulate these following diagrams. So ये circuit को simulate करके देगा. Okay, so first tell me इसको simulate करने के लिए do you require bit instruction or byte instruction? Bit instruction. Why bit instruction? Why not byte instruction?
only deal with 0 1. Yeah, because this circuit will only deal with 0 and 1, so that means आपके पास जो input है, that is you have 6 inputs, which is A, we have B, we have C, we have D, we have E, and we have F. Okay, so we get an output as over here as G, then we have G के बाद क्या आता है? A B C D F G H, then we have I, and then we finally get the output as J. Okay, so ये हमारे पास set of input and output है जो हमें produce करना है, and these all input and output will be 1 bit or 1 byte of data. 1 bit or 1 byte of data. 1 bit. 1 bit of data. So हमें ये ऑपरेशन करना है. So can you do that? Can you do that? कर सकते हो आप ये प्रोग्राम को सिमुलेट कर सकते हो? Yes. Yes. First we need to assign A, comma B. And A and B. लेकिन A and B डायरेक्टली नहीं कर सकते ना. We cannot A and B करके कोई इंस्ट्रक्शन है क्या? Move C, comma A. सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? ये एड्रेस को अज्यूम करना पड़ेगा. What will I have to assume? कि what are the address of these bits? Okay, so we'll have to assume the address of the bit. Okay, so A जो है we'll assuming as A as the address as 00H. Okay, A का जो एड्रेस है that is 00H. B का जो एड्रेस है we are assuming as 01H. C का एड्रेस will be assuming as 02H. D का एड्रेस will be assuming as 03H, and so on. Okay, E का एड्रेस will be assuming as 04H. F का एड्रेस will be assuming as 05H. F G का एड्रेस will be assuming as 06H. H का एड्रेस will be assuming as 07H. I का एड्रेस will be achieving as 08H. J का एड्रेस will be achieving as 09H. So where you get the final output? On which address? K भी होगा सर. क्या बोल रहे हो? K भी होगा सर. एक रह गया. K. G और H का एंड होता है वो K वाला. रह गया. G और H. Okay, हाँ. So यहाँ पे J आएगा, and this will become your K. This will become K. So J is 09H, and K will be equal to. What is the address of K? 0AH. 0AH. Okay. So your final output will be displayed at which location? 0AH. Okay. So that is the address where your final output will be printed. Okay. This has been assumed now. This address has been assumed. अब आप क्या करोगे? सबसे पहले आप क्या करोगे? What you will do? Either आप इस एड्रेस पे आप डेटा ट्रांसफर कर लो, जो डेटा आपको डालना है. ओके, या लेट अज्यूम उसको सेट या क्लियर आपने कर दिया है, जो भी कर दिया है, हम अज्यूम कर लेते हैं उसके अंदर कोई भी वैल्यू है, हमें सिर्फ उसको ये सर्किट को दिखाना है. तो कैसे करोगे? फर्स्ट व्हाट यू विल परफॉर्म एंड ऑपरेशन और ऑपरेशन बिटवीन व्हिच एड्रेस? परफॉर्म व्हिच ऑपरेशन हो ये? एंड. सो एंड आप किसके बीच में करोगे? सो ए एंड एन करोगे बिटवीन व्हिच ऑपरेशन? A and B. A and B. A and B आप डायरेक्टली लिखोगे. इज इट अ वैलिड इंस्ट्रक्शन? No. No. नॉट अ वैलिड इंस्ट्रक्शन. फिर किसके बीच में करोगे? सर इंस्ट्रक्शन है ना, ऐसा तो रजिस्टर्स के बीच में या ऐसा तो बिट्स के बीच में एंड होगा. क्या बोल रहे हो? बिना कैरी का एंड ऑपरेशन नहीं हो सकता. बिना कैरी के एंड ऑपरेशन नहीं हो सकता. आपको कैरी लेना पड़ेगा. तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? मूव करना पड़ेगा. मूव क्या करना पड़ेगा? ए का जो कंटेंट है, Comma A. ए का कंटेंट है विच इज स्टोर्ड एट 00H लोकेशन, उसको पहले कैरी में डालना पड़ेगा. सो क्या करना पड़ेगा? मूव C, 00H. 00H पे क्या है? ए है ना आपका. Yes. यू आर मूविंग दैट ए इनटू C फर्स्ट. बराबर है? Yes. इज दिस इंस्ट्रक्शन वैलिड इंस्ट्रक्शन और इनवैलिड? वैलिड. Valid. अब आपके पास एक बिट जो यानी ए का जो डेटा है, इट हैज बीन मूव टू कैरी फ्लैग. अब आपको क्या करना है? और ऑपरेशन किसके बीच में करना है? कैरी और बिट के बीच में करना है आपको. तो अब आप एंड अप्लाई कर सकते हो. सो एंड आप अप्लाई कर रहे हो, एंड किसके बीच में? कैरी और B. 0 1 H. बी को आप 01H से दिखा सकते हो. तो 01H और सी के बीच में आप एंड ऑपरेशन कर रहे हो. सो द रिजल्ट विल बी स्टोर्ड वेयर? C. Is it a valid instruction? Again, is it a valid instruction? Yes. Yeah. So it is a valid instruction. The result is stored in carry flag. So ये जो G में जो आपका वैल्यू था, ये अभी C में है. अब आपको मूव करना है इनटू
G G. में G का एड्रेस क्या है? What is the address of G? 068. So what is the instruction that you can write over here? Move Move Comma C. 06H, C. 06H, C, यानी C का जो आपका डेटा था वो मूव हो गया 06H लोकेशन पे, and that 06H location is a bit location or a byte location. Bit location. Bit location, okay. So ये हमने किया, it is a valid instruction. तो अभी यहाँ तक आपका हो चुका है. अब आपको आगे का करना है. आगे में क्या करना है? C का जो डेटा है वो आपको कैरी में डालना पड़ेगा, okay. So this C is a variable and this C is a carry, okay. So आप C को पहले आप उसका एड्रेस फाइंड करोगे. उसका एड्रेस इज 02. तो 02 के एड्रेस पे जो भी डेटा है उसको आपको कैरी में डालना पड़ेगा. So what is the instruction that you can write? Move C, 02H. C, 02H. So whatever is the data which is stored at 02H location, that data would come into the carry flag. Okay. Once it is done, now you can perform the AND operation or OR operation for that. OR operation. So it will be ORL between carry and D. D का एड्रेस क्या है? 03H. Okay, so 03H is again a valid instruction, so we can perform this operation. Now the result will be stored in C, which is carry flag. So we need to move the carry flag because अगली बार डेटा को हमें कैरी में डालना है. E को डेटा जो E का जो डेटा वो कैरी में डालना है. So पहले कैरी को मूव करना पड़ेगा into H, right? So what is the next instruction that we need to do? Next instruction क्या होगा? Move. H का एड्रेस है 07H. So क्या होगा? 07H, C. Okay. Now the data has been moved. The carry के अंदर जो डेटा था has been moved into H location. H पे हमने move कर दिया. Now again carry flag is ready to perform the other operation. तो अगला क्या करेंगे? E का जो डेटा वो carry में डालेंगे. Okay. So E का डेटा is location of E is 04H. So what we'll do? What is the next instruction that we do? Move C, 04H. C, 04H. Okay, so 4H का लोकेशन का जो डेटा है वो हमने C में डाल दिया. Okay, now उसके बाद क्या करना है? और करना है या एंड करना है? और कॉम्प्लीमेंट. और किसके बीच में करना है? C के बीच में और // F. What is the address of it? We cannot write down F. 05H. It is 05H. /05H यानी 05H लोकेशन पे जो भी आपका बिट होगा उसका कॉम्प्लीमेंट लेके कैरी के साथ आपको और करना है. Okay, so again it is a valid instruction. The result will be stored in carry. Okay, now that carry will has to be moved to a location called as I. 08 पे मूव करना पड़ेगा. So again what would be the instruction? Move 08H, C. So again it is a valid instruction. So यहाँ तक हम आ चुके हैं. अब क्या करना है? G और H के बीच में एंड करना है. लेकिन एक जो है आपको आइदर G या H किसी एक को आपको कैरी में डालना पड़ेगा और फिर आपको एंड करना पड़ेगा. बराबर ना? बराबर. So हमें क्या करना पड़ेगा? G को let's say G को हम मूव करते हैं to carry flag. So what is the instruction that we can give? Move C, the location of G. Location of G is 06H. Okay, so यानी 6 का जो लोकेशन पे जो बिट था मेरा, यानी G के लोकेशन पे जो बिट था मेरा, वो मैंने कैरी के अंदर डाल दिया. उसके बाद अब मैं क्या करूंगा? एंड करूंगा. Okay, so एंड के लिए it is ANL and between whom will we perform the add operation? Carry and H. H is identified by H is 07H location. Okay, so this is again a valid instruction. The result will be carry flag. That result of the carry flag has to be stored into J location. So J location is 09H. तो क्या लिखोगे? Move 09H, C. So यहाँ तक आपका हो गया. And last क्या करोगे आप basically? Last वाला क्या करोगे? I और J के बीच में आपको और करना है. और करने के लिए या तो J को C में रखो या तो I को C में रखो. तो मेरे ख्याल से ऑलरेडी C में ये था तो आप वो कर सकते हो. चलेगा, ठीक है. फिर भी आप क्या करो? अब I को कैरी फ्लैग में डाल दो. Put the content of I into carry flag and perform the OR operation between I and J. So I is
08H. So we'll perform the operation which is move C comma 08H. Yani I has come into carry flag, and then perform the last operation which is ORL. ORL किसके किसके बीच में करोगे? The carry flag and J 0 J is 09. इनके बीच में आपने ORL कर दिया. Okay. And finally the result will be stored in C, which has to be transferred back to K location. So K location पे आपको move करना है. So what is the last instruction that you have to write? move 0 Move 0A comma H C. C. Move 0H comma C. So this is the final instruction. Okay. समझ में आया? So this question has came during my time. It has came. I don't know आगे का मैंने कुछ पेपर देखे नहीं है, but मुझे याद है क्योंकि मैंने ये पेपर दिया था उस टाइम पे 10 साल पहले. So yeah, उस टाइम पे ये 10 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया था. Okay. So it can be asked during this time also. It can be asked. So ऐसा कुछ सवाल पूछा जाएगा. कोई भी एक लॉजिक सर्किट दे दी जाएगी और आपको बोला जाएगा कि प्लीज परफॉर्म द बिट ऑपरेशन बाय यूजिंग bit भी लिखा नहीं होगा. You have to decide whether you have to perform the bit operation or a byte operation. They will just ask you using the instruction of 8051 simulate the following circuit. So देख के तो बहुत घबरा जाओगे आप ये कैसे सिमुलेट करना है, बट बेसिक इतने चिंदी इंस्ट्रक्शन आपको यूज करके आपको 10 मार्क आराम से मिल सकता है इसके अंदर. ओके, सो डोंट जस्ट जज बाय लुकिंग एट द क्वेश्चन एंड गेट horrified by that particular question. उसको देखो, ध्यान से समझो, आराम से देखो उसको, आपको ऑटोमेटिकली उसका कुछ ना कुछ एक सोल्यूशन मिल जाएगा. ओके, so how did you find this question? Was it difficult or is it easy to understand? Easy. Easy. So ऐसा ही कुछ अगर आपका नसीब अच्छा हुआ तो ऐसा भी प्रोग्राम आपको पूछा जा सकता है. Okay, so that's all that I want to discuss. इसके बाद next class में जब भी हमें टाइम मिलेगा, we'll discuss the last instruction group which is called as the jump instruction. Okay, so jump instruction is one of the most important set of instructions that we'll be discussing. उसके अंदर मेरे ख्याल से 2 या 3 घंटा जाएगा jump instruction को समझने के लिए, क्योंकि there is a important concept which is called as S jump, A jump and long jump, which is short jump, absolute jump and long jump, which is again a huge topic that can be asked. एक अलग से 10 मार्क का लास्ट ईयर के पेपर में स्पेसिफिक सवाल पूछा गया है 10 मार्क के लिए स्ट्रेट, द डिफरेंस बिटवीन एस जंप, ए जंप एंड एल जंप. ओके, दो इट फील्स लाइक कि नहीं पूछा जा सकता, लेकिन कभी-कभी बहुत सिंपल से सिंपल सवाल भी आपको 10 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, व्हिच यू हैव लीस्ट एक्सपेक्टेड. ओके, बट स्टिल दैट क्वेश्चन कैन कम इन योर पेपर. सो विल बी लुकिंग अबाउट these jump in more detail. We'll be understanding from every aspect, and we'll be trying to find out the difference between each jump. Is it clear? Does anybody has a doubt in today's lecture? किसी को doubt है आज के lecture में? No. No. Okay. So yeah, you can leave. Those who have done, they can leave now. Thank you guys. Thank you so much. किसी को doubt है, they can stay behind.